Good morning students. So today we are going to start third chapter of practical portion, graphical representation of data. So before this we studied about the data representation, data processing, how we can present it through the mean, mode and median and range. I have explained already. So now here students, we study about the representation of data. So mostly I think you have seen the people who gave presentation, okay, from you can see in the companies and even in the schools also. So presentation जब हम people देते हैं, so they are collected from a variety of sources, okay. Just write the geographers, economists, resources scientists and the decision makers are use a lot of data these days. So it is very easy to form complete data and to show to the people through the graphs, diagrams, maps and charts is called representation of data. Okay, so here you can see students. So we can say if we uh, use a particular definition of it, so we can say students, the transformation of data through visual methods like graphs, diagrams, maps and charts is called representation of data. So this is the perfect definition can be of representation of data. Clear? And mostly many more topics are there, like this type of data makes it easy to understand the patterns of population growth, distribution and the density, sex ratio, age, sex composition, occupational structure, etc. Okay, and so this is representation of data. Now next is general rules for drawing graphs, diagrams and maps. So mostly students, whenever we use any tricks, we have to follow the rules. ओके, सो हर चीज़ में कोई भी अगर आप ड्राइंग बनाते हो, ग्राफ्स या डायग्राम्स बनाते हो, मैप बनाते हो, तो हमें उसमें क्या करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है. ठीक है. सो हियर वी हैव नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ अ सूटेबल मैथड. Selection of a suitable method. So here we have to select a suitable method, like data representation, various themes such as temperature, rainfall, growth and distribution of population, production, okay, distribution of trade and different commodities. So these characteristics of data need to be suitably represented by an appropriate graphical method. For example, क्या है यहाँ पे कि data related to the temperature of growth of population between different periods and time, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, different periods होते हैं, different time होते हैं for different countries, states may be best be represented using line graphs. Similarly, bar diagrams are suited for showing rainfall or production. Okay, so line graphs are like this, and by bar diagram like this. When we use it, जिनकी width जो होती है वो same होती है. ठीक है. Next is selected of suitable scale. So whenever we make any scale, okay, so that time we have any map, so we have to choose a suitable scale. Suppose you have to draw a map of India, you cannot show a large size on the sheet, it is not possible. So that time we have to use a scale, a particular scale, like suppose 1 centimeter is equal to 1000 kilometer. Okay, so according to this we have to choose a scale. It is very important, student. And you can see as an example, you can see a map, you can have any map of India. So you can see always it mention always scale mentioned on the map, right? Next is a design. So design, students, we know that the design is an important cartographic task. So map making,
सो यहाँ पे जो है हम जो है 11th क्लास में भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिज़ाइन कि जो कार्टोग्राफिक होती है उसमें किस किस तरीके से हम मैप को ड्रॉ करते हैं, कैसे कार्टोग्राफिक डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। सो दिस शुड बी केयरफुली शोन ऑन द फाइनल डायग्राम मैप। तो डिज़ाइन किस तरीके का हम फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज title. Title should be mentioned student whenever we are making any map diagram, so वहाँ पे उसका title होना ज़रूरी है। So if you are forming a design a map of India and if you are showing population on the map, so it should be title should be mentioned on the top, okay, it is very important. Then next is legend. What is legend? Legend और index. Index is also very important. जब आप एक मैप को बनाते हो तो वहाँ पे आप लास्ट में किसी भी मैप को आप देखिए, इंडिया का जो जनरल आपका मैप होता है तो वहाँ पे एक इंडेक्स बने होते हैं, ठीक है, एक बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें यू कैन शो इट। सपोज इफ़ यू आर शोइंग वेजिटेशन, इफ़ यू आर शोइंग वाइल्ड लाइफ, इफ़ यू आर शोइंग मिनरल्स, सो मिनरल्स में भी अलग अलग अगर वैरायटी ऑफ टाइप्स शो कर रहे हैं तो इट शुड बी shown on the index also. So index is also very important. Now next is direction. Direction you can see on the map like east, west, north, south. ये भी जो है स्पेशली आप नॉर्थ पोर्शन को मेंशन किए हुए मैप में देख सकते हो. सो द मैप्स बीइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ्स surface, it is also very important. So these are the rule student, जिसमें मैंने आपको बताया कि first is selection of a suitable method, selection of suitable scale, design, title, legend which is called index also, and last one is direction, right? Okay, now next is construction of diagram. So how can we construct a diagram? ओके, सो जिसमें हम विड्थ का देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं, डायग्राम्स एंड द मैप्स दैट आर ड्रॉन टू द रिप्रेजेंट these data related characteristics may be grouped into the following types. So here are mentioned. So हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होता है डायग्राम का, इट इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स, राइट? 3 types of construction are there. One is one dimensional diagram, टू डायमेंशनल डायग्राम एंड थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स. तो यहाँ पे 2D 3D जो बनते हैं इसमें, तो वन डायमेंशनल डायग्राम्स में लाइक लाइन ग्राफ वी आर फॉर्मिंग, पॉलीग्राफ, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, एज, सेक्स, पिरामिड. सो दीज आर वी आर शोइंग ऑन द वन डायमेंशनल डायग्राम. सेकेंड इज टू डायमेंशनल डायग्राम सच एज पाई डायग्राम जो हम बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, एंड रेक्टेंगुलर डायग्राम. देन थर्ड इज 3 डायमेंशनल डायग्राम्स में हम स्पेशली क्यूब्स बनाते हैं, स्पेरिकल डायग्राम्स जो हमारे अर्थ का जो शेप है अकॉर्डिंग टू दैट. सो दीज आर लाइन ग्राफ्स, बार डायग्राम्स, विंड रोज, स्टार डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, पाई डायग्राम्स. सो विल डिस्कस इट वन बाय वन स्टूडेंट. एंड हाउ विल यू ड्रॉ इट, द ड्राइंग जो बनानी है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. सो लाइन ग्राफ्स आर यूजुअली ड्रॉन टू द रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज, ठीक है, कि टाइम सीरीज़ को हम जिसमें शो करते हैं लाइक अकॉर्डिंग टू द टाइम हम टेम्परेचर को दिखाते हैं, रेनफॉल को दिखाते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करते हैं, बर्थ रेट को शो करते हैं. सो देर आर सम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन ग्राफ. सो दिस आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपका सिर्फ कंस्ट्रक्शन में बताऊँगी. एंड देन सेकेंड इज़ this is line graph students. If you want to see the picture, this is line graph, right? Next is polygraph. Polygraph क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीग्राफ मीन्स डिफरेंट, मीन्स पॉलीग्राफ जिसमें आप एक तरीके की लाइन ग्राफ को नहीं देखते, इसमें 2 3 मोर देन 2 line graph if is represented on the same graph, it is called polygraph, right? Next is bar diagram. What is bar diagram? So bar diagrams are drawn through columns of equal width according like this. Okay, we are showing it like this. So the width of all the bars or columns should be similar. It should be similar when you are drawing a bar diagram. So the columns and that width should be same. All the bars should be placed on equal intervals in distance, right? And the third one is bars may be shaded with colors or patterns to make them distinct and attractive. So bars you can show it in a different color,
You can use different colors to draw it. Sometimes we are making bar diagram, 2-3 types of bar diagrams we are showing together. Okay, next is simple bar diagram. Now simple bar diagram is constructed for an immediate comparison. It is advisable to arrange the given data set in an ascending or descending order and plot to data variables accordingly. So I'll show you here. This is the data, and according to this data we can see the bar diagram. Okay, this is the bar diagram of rainfall. Months are mentioned here, and another side you can see rainfall in centimeters. Next is line and bar graph. So sometimes we are drawing design line and bar graph together in a same design. Okay, like here you can see it, here it's a bar diagram, so you can see here, and another side you can see on the same map you can see line graph also there. So here what we are showing, we are showing rainfall in centimeter in bar diagram and temperature in degree centigrade in line graph. Okay, so the both the graphs are together. Next is multiple bar diagram. So multiple bar diagram, students, you can see here, I'll show you this. We have 3 topics here: person, male and female, and all 3 things we are showing in the same graph. Okay, so with the different colors we have drawn this person, male and female, and the dark color used for female. So you can see this is called, what does it call? It is called multiple bar diagram, right? Next is compound bar diagram. Now what is compound bar diagram, students? Here compound bar diagrams are like, if we talk about the construction here, thermal, hydro, nuclear, total. So this all together we are showing in the same graph. Okay, so when different components are grouped in one set of variables, different variables on of one components are put together, तो वो जब सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, जैसे थर्मल आपको दिख रहा है, हाइड्रो यहाँ पे दिख रहा है, न्यूक्लियर यहाँ पे दिख रहा है, उसका टोटल कर दिया गया था, एंड द सेम ईयर, इन द सेम ईयर वी हैव टू शो इट टुगेदर. So it means it will be called compound bar diagram. Clear? Now next is pie diagram. What is pie diagram, students? Pie diagram में क्या होता है mostly? Here you can see it is also called divided circle diagram. Pie diagram जो है आपका एक wheel, it is also called wheel diagram also. Like okay, so is another graphical method of representation of data. It is drawn to depict the total value of the given attribute using circle, like wheel. In wheel shape we are drawing it, and then according to the data we are following the angle. Okay, different angles we are showing it. एंड जब हम पाई डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमेशा जो इसका टोटल होता है वो हमेशा हमारा 360 आना चाहिए. अगर आपका जो कैलकुलेशन करते टाइम, डिग्रीज़ को कैलकुलेट करते टाइम, इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग टोटल 360 डिग्री, इट विल बी रॉन्ग. ओके, जब आपका 360 डिग्री टोटल आता है तो इट मीन्स कि वो करेक्ट है. सो यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है फॉर पाई डायग्राम. ओके, दिस इज pie diagram, students. Okay, direction of Indian exports in 2010 and 11. Next is flow maps and charts. So here students we are showing as a flow. Suppose you are going somewhere, आपको वहाँ का कुछ आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, किस वे पे जाना है, तो वहाँ पे आपने मोस्टली एक बोर्ड देखा होगा जिसे फ्लो चार्ट या फ्लो मैप कहा जाता है, कि किस वे पे आपको कौन सी जगह मिलेगी. ठीक है, और राइट साइड पे कौन सी जगह मिलेगी, लेफ़्ट साइड पे कौन सी जगह मिलेगी. तो ये जो है एक पूरा का पूरा बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड फ्लो मैप और फ्लो चार्ट. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक मैप ऑल्सो. ठीक है, इसे डायनेमिक मैप भी कहा जाता है. और स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स में स्पेशली जो एग्जामिनर होते हैं वो यही चीज़ें पूछते हैं. समटाइम्स दे आर आस्किंग कि फ्लो चार्ट, फ्लो मैप का अनदर नेम क्या है. ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट, and construction and all will I'll make another
video for it, and you have to read it. This you can see, students, here on this picture Ganga basin has mentioned here, Nadi river, and this is according to this is called flow chart or फ्लो मैप. ओके, किस तरफ को कौन सी रिवर जा रही है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द मैथ. नाउ थीमेटिक मैप्स स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी taught you in the 11th class कि इसमें thematic maps with especially graphs and diagrams are serve as useful purpose in providing a comparison between the international variation within the data. So thematic map में especially students यहाँ पे then I will explain some more topics are there. So I'll explain thematic maps and the classification of thematic maps based on method of construction, dot maps, and then we have next we have choropleth map, and then next is isopleth map. So we all discuss this about this in the next video. Till then, thank you so much, student.